Hello student, today I will discuss about chapter number 17, quadrilaters. What are quadrilaters? Quadrilaters are generally four-side polygons or four-side polygons is called quadrilater. It have four side and four angle. Let's watch. It is a four-side polygons. It has four sides A, B, C, D. Four side means AB, BC, CD and AD. It has four sides and four angle. Four angle हमारे पास है एंगल A, एंगल B, एंगल C and angle D. Having four sides AB, BC, CD and DA, and having four angles angle B, angle C and angle D in cyclic manner. Cyclic manner means they should be writing simply after A के बाद B, B के next C, C के बाद D. You not write like that A, B, C, D. That is a not cyclic manner. Clear student? They should be write in cyclic manner. Order में write करना बच्चे अपने एंगल A, B, BC, CD and DA. इसमें एक quadrilateral have four sides and four angles. Four-sided polygons. The four sides polygon उसे कहते हैं quadrilateral and four equal sides. If four sides are equal, if four sides are equal, it is called square. If four sides are equal, that is called square. If four sides में से two sides are equal, that is called rectangle. Next, if two sides are parallel and opposite sides are equal, then it is called parallelogram. Two sides are parallel but opposite sides are equal. That is called parallelograms. These parallelogram opposite sides AB and CD. AB and CD. If non-parallel side, it is called trapezium. Non-parallel side means one side have smaller length, another side have larger length. That is non-parallel side. These are called trapezium. That is called trapezium. Clear, student? And quadrilateral also have one property. Student, what are adjacent sides? Adjacent sides. Quadrilateral have adjacent side. Adjacent side means neighbor side. Neighbor side. Neighbor means AB के नियर है, AB के नियर नेबर है पॉइंट BC और BC के नियर है पॉइंट CD और CD के नियर पॉइंट है DA. These are the neighboring sides. अगर हम एंगल की बात करें और एंगल A के नेबर है एंगल B और B के नेबर्स एंगल है C और एंगल C के नेबर एंगल D. These are the neighbors for adjacent sides and angles. Let's discuss exercise questions. Exercise question number first. In quadrilaters, हमने quadrilater लेट की. Quadrilateral given हमें A, B, C, D.
फर्स्ट आंसर है डायगोनल AC and BD. These lines are called diagonal. Second, two pairs opposite sides. Opposite side हमें given है AB opposite to CD, AD opposite to BC. फर्स्ट पेयर आ गया आपका AB इक्वल टू CD और सेकंड AD opposite to BC, AD opposite to BC. Then two pairs of adjacent sides. Adjacent means neighbor. मैंने बताया आपको AB नेबर, AB का नेबर है BC और BC का नेबर है CD और CD का नेबर है DA. These are the neighbors are AB, BC, CD and DA. Similar two pair of adjacent angles. Adjacent angle means neighbor. A का neighbor है B और B का neighbor है C और C का neighbor है D. These are the neighboring angles. Clear? Then क्वेश्चन नंबर सेकंड, ड्रा ए पैराग्राम. हमें AB गिवन है 6.5 एंड AD गिवन है 4.8 सेंटीमीटर और एंगल BAD हमें गिवन है 70 डिग्री. फाइंड मेजर डायगोनल लेंथ. हमने डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है. हमें गिवन है कि AD, हमने मान लिया कि AD हमें गिवन है कि लेंथ गिवन है 4.8. हमें गिवन है कि AD 4.8 और एंगल A में ड्रा करना है. एंगल हमें गिवन है 70 डिग्री. यू विल ड्रा विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर में एंगल 70 डिग्री. एंड हमें गिवन है कि AB गिवन है 6.5 और अब आपने आर्क से 6.5 की कट लानी है. 6.5 सेंटीमीटर हमें गिवन है AB. इन पैराग्राम opposite sides equal. अगर this side was 6.5, this side also 6.5 and join this. अगर this side 6.5, this side also 6.5. In parallelogram opposite sides are equal. We have find the measure diagonal length. हमने diagonal की length को find out करनी है. AC with the help of a scale to measure diagonal length AC और BD have similar. We will find approximate 9.2 centimeter comes. That is the length of diagonal AC और BD. Clear? Next, two sides of parallelogram in ratio. हमें रेशियो में गिवन है टू साइड पैराग्राम. इन पैराग्राम की फर्स्ट में ड्रा पैराग्राम A B C D और हमें रेशियो में गिवन है 4:3. अगर हमें रेशियो में गिवन है लेट हम रेशियो को वन साइड 4x, सेकंड साइड 3x. अगर वन साइड 4x है और ऑपोजिट साइड आर इक्वल, these are 4x also 4x, this side 3x, this side also 3x. हमें पेरीमीटर गिवन है 56. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड. हमने लेंथ फाइंड आउट कर लिया इसकी. व्हाट इज द फॉर्मूला पेरीमीटर? ऑल साइड्स ऐड 4x plus 3x plus 3x 4x plus 3x. पेरीमीटर इक्वल टू टोटल लेंथ और हमें पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है 56.
4 plus 3 7, 7 plus 4 11, 11 plus 3 14. 14 on the right hand side, multiply, shifting another side, divide. 56 divided by 14, we will get 4. Value of x is 4. Substitute the value here from one side. आपके पास one side की लेंथ आ गई है, हमें गिवन है one side 4x. Substitute the value here 4 multiply 4, that is 16. One side is 16. Similarly, we will find second side 3x. Substitute the value 3 multiply 4, that is 12. One side is 16, another side is 12. Next question number 4. Name diagonals are equal and adjacent sides are unequal. Diagonal बच्चे आपको पता है, that is the, अगर आपके diagonals equal है, if sides are adjacent sides are unequal, it is called rectangle. Second, the diagonals of rectangles are perpendicular to each other. If diagonals of rectangles are perpendicular to each other, then it is a square. If diagonals of are unequal and adjacent sides are equal, adjacent side means neighbor side, that is called rhombus. Question number 6. True or false? The diagonal of parallelograms are equal? No. Diagonals of parallelogram never equal. False. Diagonal of rectangles are perpendicular to each other? No. Square के perpendicular होते हैं ना बेटा? That is false statement. The diagonal of rhombus are equal? No. The diagonal